So, hey guys, hey everyone, we are back again with another session of Masters of Sales, and आज हमारे साथ अनीश चौधरी हैं, who works with Yes Bank, and we'll obviously talk more about his experience, his journey working with so many of good brands, leading the sales and marketing in these organizations, and उनसे समझेंगे, उनसे सीखेंगे कुछ चीज़ें जो हम अपने business में implement कर पाएँ, and before we go further and take deep dive into his introduction and start asking him various questions, उससे पहले जो मेरी ड्रिल होती है नॉर्मली मैं सबसे पूछता हूँ, एक दो कोई कमेंट करके प्लीज बता दो कि आपको हमारी आवाज आ रही है, और इफ यू कुड हेयर अस एंड सी अस बोथ, and then we will begin with the questions around this particular session. Or in the meantime, आपके इस during the entire session, which is going to last around 20-25 minutes for the particular discussion, उस दौरान अगर आपके कोई questions हैं जो आप पूछना चाह रहे हो तो आप comment में लिख सकते हो, because at the end of the session we will ask Anish questions that you have put together. तो कोई भी आपके concern है, कोई भी question आपको लगते हैं कि मुझे पूछने हैं related to sales, related to marketing and related to banking sector as such, तो आप पूछ सकते हो, और प्रीवियस ऑब्वियसली सेक्टर के ऊपर भी जिन पे अनीश ने काम किया उनके रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. सो थैंक यू अमित, थैंक यू अभिषेक फॉर कंफर्मिंग. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अनीश. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अनीश इस सेशन के लिए, स्पेशली क्योंकि मुझे बैंकिंग सेक्टर की सेल्स और मार्केटिंग बहुत बहुत ही एक्साइटिंग लगती है. तो बिफोर वी बिगिन, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप खुद अपने बारे में ये बताओ कि आपकी पर्सनल अभी तक की जर्नी क्या रही है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से हुए हो, वेयर ऑल यू हैव बीन, एंड फ्लेवर ऑफ प्रोफेशनल जर्नी एज वेल. थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो जनता को, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. Sure. So thank you, Nitin, for having me here, and very, very warm evening to all the live audience out here. Thank you for having me here. So, Nitin, I've been born and brought up in Calcutta, actually, and I did my graduation there. And wahan se, I moved to Goa for my MBA. I did it from Goa Institute of Management. I've also done my chartered accountancy till the PE2 stage. Uske baad, I joined the Tata Group. So I've worked with different Tata Group companies, and I've had the opportunity to be part of their leadership program called Tata Administrative Services. And उसके चलते बहुत सारे experiences हुए, बहुत अच्छे अच्छे. And I've worked in both B2B and B2C sector, sales, marketing, product. And then उसके बाद I was with Edelweiss. I was part of the credit businesses there, and I did a lot of work on digital and product space. And now I'm in the banking space. So कुल मिला के I would say that I love building stuff. मुझे चीजें बनाना अच्छा लगता है. And in my whole career I've built some very interesting businesses and product lines. Some we have been able to create some new markets also. So India में आप जितना भी you might be seeing the granola bars or some natural sugar free, some of those markets we have played a big role in creating. Personally, I think my specialization now is more in the space of digital data and design thinking, which I think these are things which are relevant for any function, be it sales, marketing, or otherwise. And personal life, mein, of course, as I'm also into coaching. I'm a certified emotional intelligence coach. So in whatever free time I get, I get involved in that as well. So yeah, that's a brief about me. अमेजिंग. तो टेस्ट की जर्नी कैसी रही थी, मतलब अगर हम उसकी बात करें, मैं बाद में गोवा पे आऊँगा आपके पास, क्योंकि मैं खुद अभी गोवा में हूँ, तो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा जब आपने बोला आप गोवा इंस्टीट्यूट में Yeah. पढ़े हो, तो मैं उसके बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा. बट जो टेस्ट की आपने जर्नी बताई, काफ़ी एलीट, मतलब इट समटाइम्स पीपल कंपेयर इट विद द आईएएस ग्रेड रैंक. हालांकि बहुत मतलब अलग टाइप का कंपैरिजन है वो, बट पीपल गिव लॉट ऑफ प्रिविलेज एंड एम्फेसिस कि भाई बहुत अमेजिंग टास्क का जो वो रहता है. तो क्या जी. क्या फर्क लगा आपको बाकी कंपैरिजंस में? आईआईएम की अगर हम बात करते हैं, एबीसी में भी अच्छी एमबीए होती है, तो कंपेयर टू दैट जर्नी वेयर यू एंडेड अप विद दैट प्रोग्राम. No, I think it was a life-changing experience. I think the TAS program was conceived, I think, 4 or 5 decades back, more than that actually, and it's been one of the most coveted leadership programs across the world. And राइट. I think the program is very unique because it gives you an exposure to become a good leader.
It is not Hmm. like, it's agnostic to any function. कोई ऐसा नहीं है कि आपको sales marketing कोई particular area में सिर्फ करना है. So, and they have a very powerful grooming model. So it's not, once you qualify, so getting into it itself is difficult. Either you get it through campus. I got it from within the group. So I was part of Tata Motors. That was my first job after Hmm. campus. And I think out of some 10,000 odd applicants, six of us were selected from entire Tata Group to qualify for TAS Hmm. in the 2012 batch. And so one, it's difficult to get in, but there were some 7 8 rounds, and you get interviewed by the directors of the group, and बहुत सारी psychometric tests and all होती हैं. But I think Hmm. more than that, once you get in, the learning and exposure that you get, because Tata Group itself has so many group companies, and also the learning and exposure Hmm. is also tremendous. And obviously, in terms of the programs, because I was part of the Tata Trusts also as one of the projects, so you get a full spectrum, including the social and economic aspects of the country. So that way, it was a very very enriching experience as part of the whole part of my career. तो आपने तो मल्टीपल टाटा ग्रुप कंपनीज के साथ काम किया होगा, और वर जी. यू जस्ट फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर No, I worked with सेक्टर? multiple group companies. Almost, I know Tata Motors, Tata Steel, Tata Chemicals. So yes, I've been part of various group companies. सो वो जो बोला जाता है कि जो टाटा की इंटीग्रिटी और प्रिंसिपल्स हैं, डिड यू नोटिस दैट कि हर कंपनी में, चाहे किसी भी टाटा मोटर्स में चले गए, स्टील में चले गए, टीसीएस में चले गए, हर एक जगह पे वो सेम प्रिंसिपल्स आपको लगता है कि वो वैसा ही फॉलो हो रहे हैं, मतलब, और No, यू सी obviously. समथिंग? या. No, I think the ethos of the group, I mean, if I, why just Tata's, if I just talk in general, any organization which has been there for, so many years, more than a century, हम्म. you can't just be, you have that kind of longevity just because of financial strength, or, some right things that you're doing in the market. वो तो जरूरी है. But I think more हम्म. than that, आपका DNA कैसा है? And I think that राइट. DNA is something that makes any organization stand out. And अब दुनिया भर में किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, एंड इवन इन न्यू ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर बीइंग क्रिएटेड, अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर डीएनए. एंड आई थिंक दोस प्रिंसिपल्स एंड ईथॉस वो समय के साथ आता है, वो लोगों के साथ आता है, लीडरशिप के साथ आता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट कल्टिवेटेड. सो डेफिनेटली, आई मीन, दैट गोज विदाउट सेइंग. और जो सेल्स की बात करते हैं, हम सेल्स एंड मार्केटिंग ऑब्वियसली डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट रहेगी, उनके चैनल्स अलग रहेंगे, बट क्या ऐसा कुछ रहता है कि कि इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन था सेल्स के अंदर और मार्केटिंग के अंदर, लाइक देयर वाज सो मच ऑफ एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, और देयर वाज समथिंग कॉमन अक्रॉस ऑल दी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के, मोटर्स में भी वही आप लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच केम across the Tata Group as a learning कि यार digital is the medium that you have to go, be it any of the sector. So what were you as a task person responsible for managing multiple group at the same time, or were you focused of one group at one time only? No, so I think while it's a large group, right, and the work that I used to do was depending on which business I was part of, right. So at different Hmm. points of time, I was part of different businesses, and therefore I was responsible for that particular element. But अगर आप Hmm. your जो main question आपने पूछा कि how does it vary across industries, if I may put it this way, like I've worked in auto sector, I've seen nutrition, I've seen FMCG, and now BFSI. If I talk about these 4 5 sectors, I think हर सेक्टर की अपनी खुद की प्रायोरिटीज हैं, challenges हैं. And B2B Right. और B2C में भी बहुत अंतर होता है, right. I think the adoption, if I talk about purely digital, अगर जैसा आपने कहा, I Hmm. think if you see the trend also, सबसे पहले consumer segment में इसका ज़्यादा adoption obviously हो रहा है. And within that Right. also, if you see, I would say the BFSI space, and even if you take e-commerce and all, they have taken up a lot more in terms of some of these transformations, because they for a variety of reasons. I think it's a big subject in itself why it has taken up in that way. But अगर आप manufacturing ये सब में जाओगे, तो there's a lot of stuff that is happening on the back end, especially on the Hmm. manufacturing side, processes side, उसमें बहुत हो रहा है. Hmm. फ्रंट एंड पे उसकी इतनी असर नहीं दिखती है, बिकॉज मोर देन डिजिटल द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज may not be digitally deliverable. If you take a car for example, in the Hmm. last 10 20 years, if you see the amount of automation that has happened there, both in the sense of manufacturing Right. it and also Yeah. the whole platform, it's tremendous. But usko, will you call it digital? You may or may not.
but technology Hmm. wise there's been a lot of work. So I think that's happening across India. I think it's a great time to be in India. अगले 10 Hmm. वर्षों तक आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, I think it's a great time to be in, and every sector is going through its own transformation. So Hmm. that's the way I see it. ओके, अब थोड़ा सा बीच लाइफ के ऊपर पूछता हूँ 1-2 मिनट, फिर उसके बाद आगे जाऊंगा मैं। आपने 2 साल, कितने 2 साल रहे होगे आप गोवा में? जी बिल्कुल, it was full time. फुल टाइम तो मतलब बहुत टाइम था आपके पास गोवा एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुझे ये बताओ, बेस्ट बीच आपके हिसाब से कौन सा था गोवा का? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट अब ये तो टाइम आंसर की देना अगर मैं पड़ेगा। बात करूँ ना, तो हमारे आई टेल यू 24 घंटे में से 25 घंटे हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, टू बी वेरी फ्रैंक। वी यूज्ड टू कीप हैविंग ये सबमिशंस। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो या असलियत में ऐसा था? नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो एक वही। बहुत बहुत क्रेजी स्केड्यूल्स होते थे हमारे, सो व्हाइल एवरीबॉडी यूज्ड टू से द सेम थिंग, यार गोवा गए हो, मस्ती कर रहे होगे आप लोग, बट हाँ, frankly we had a very very good quality education there, but yes, I think it always helped। रात को 2:30-3 बजे आप सबमिशंस कर रहे हो और फिर आप निकल जाते हो बाइक राइड पे, 4 बजे आप कॉफी पी के आते हो, तो दैट वाज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैड, जस्ट वाज वेरी रिजुविनेटिंग despite such हम्म, strenuous schedules. So it just brought us together. I think MBA, a lot of people have a lot of opinions these days whether MBA adds enough value, etc. Lekin I think it all adds up in terms of the whole program, where it is, and how it is. So I think for us it was a great experience. But yeah, beach wala question, I think I personally I like South Goa more than North Goa, but I'll stop there because I think that will cause a lot of strong views. ठीक है, मैं आगे पूछता नहीं हूँ उसके ऊपर फिर। मेरा थोड़ा सा अपोजिट ओपिनियन है उसके ऊपर, बट या चलो। एनीवेज, आपने बोला मुझे स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे कि दैट यू यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ क्रिएटर, यू लाइक टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, राइट? तो कुछ उसके बारे में बताओ कि आपको ये वाली आदत क्रिएटर की कब से लगी? क्या लाइक वर यू ऑलवेज एज अ किड in some way creating things or like to create something? आपने अगर ऐसा कुछ किया तो क्या बनाया उस टाइम पे? और बड़े होने के बाद when in a professional environment working with brands like Tata Chemicals, उस टाइम पे क्या क्या आपने चीजें क्रिएट की? तो पहले बचपन की बात करते हैं, फिर आपके बड़े होने के बाद की बात करेंगे। I think it's a tough question. ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि एक आदत कब से पड़ी, but if I go back and I think one हम्म, thing I always at a very young age I always wanted to create a difference. एक थोड़ा सा वो सिस्टम था हमेशा मन में कि कुछ अलग करना है, एंड वो हम्म, पढ़ाई में भी फॉर एग्जांपल स्मॉल थिंग्स, राइट, बट आई नेवर took ट्यूशंस, राइट। हमेशा ये था खुद से पढ़ूंगा, इवन फॉर हम्म, सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल टिल वेरी लेट आई डिडंट। एक दो बार हम्म, बहुत कम टाइम के लिए लिया था एंड माय मार्क्स एक्चुअली वेंट डाउन। सो even in school, I used to participate in a lot of co-curriculars, so quizzing, हम्म, ye wo, and so it was always about trying to create things. But more importantly, I was also associated with a few organizations, like some activities which were more on social side, some social work, and trying to create some models which can enable further literacy about some of our social aspects. So वो सब चीजों में I was a bit involved. तो थोड़ा वो हम्म, करते करते हमेशा ये मुझे लगता था कि यार लकीर के फकीर नहीं बनना है। जनरली हम्म, पीपल आर डूइंग थिंग्स। कई बार होता है ना स्कूल कॉलेजेस में कि शो ऑफ रहता है थोड़ा, अपने आप को दिखाना होता है मैं कितना अच्छा हूँ, एंड देयरफॉर यू स्टार्ट ट्राइंग टू कंफॉर्म टू द नॉर्म्स कि सब कैसे कर रहे हैं या, तो चलो मैं भी वैसे करता हूँ। एंड आई ऑलवेज हैड दिस स्ट्रीक ऑफ राइटियसनेस कि जो करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, सबको साथ लेके चलना है। तो थोड़ा उसके हम्म, प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हमने कर डाली जो अब देखता हूँ तो लगता है कि यार some were very interesting stuff, but I think it was a culmination of many things. I think एक reinforcement होता है। So just to tell you, class 11 में I won a national quiz. So I was and we got a हम्म, 1 month Bharat Darshan. We went across India, and ओह, President Kalam actually invited us to meet him at ओह, Rashtrapati Bhavan. So those kind of दैट्स रियली experiences गुड। जब होते हैं तो फिर आप लगता है कि यार कुछ अगर आप आप सीख रहे हो, आप कुछ लर्न कर रहे हो, तो उसको फिर आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हो। एंड आई हैव राइट। ऑलवेज लाइक सॉफ्ट स्किल्स, आई हैव ऑलवेज बीन इनटू गुड इनटू डिबेटिंग एंड सम ऑर्गेनाइजेशनल स्टफ। तो करते करते धीरे धीरे लगा कि बिल्ड करना है, एंड इट जस्ट हम्म, हैपेंड। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनली आल्सो, सिंस आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट थोड़ा यूनिकनेस, आई वाज ऑलवेज क्वेश्चनिंग कि ऐसे क्यों होता है। इट वाज नॉट टू हम्म, से कि गलत है, बट व्हाई डज इट हैपन, आई वाज ऑलवेज क्यूरियस। एंड वो क्यूरियोसिटी फिर वो लगती थी कि इज देयर अ बेटर वे और अ फास्टर वे टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। आई थिंक वो हम्म, हमेशा से एक स्ट्रीक रही है, and which depending on what kind of situation I was in, it got manifested. And
somehow वो बनता चला गया. I हम्म. always like to take challenges. I always believe that I'm an underdog. I don't like to be a, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसमें कुछ करके दिखाएं, वो ज्यादा मजा आता है. अच्छा, तो ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी करियर तो के लाइफ, अंदर जब कुछ, हाँ, मतलब सॉरी. अगर हम ब्रांड्स की बात करें जो आपने ब्रांड्स लॉन्च किए, एक दो एग्जांपल्स के ऊपर हम लेके चलते हैं. लेट्स से आप कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहते हैं जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए, कोई ऐसा ब्रांड जो आपने शुरू से कंसेप्चुअलाइज किया हो और लॉन्च किया हो एंड यू वांट टू टॉक अबाउट दैट. सो ब्रांड से ज्यादा मैं एक सेक्टर की बात करूंगा, राइट. सो आई थिंक हाँ. व्हेन आई वाज पार्ट, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट आई वाज इन वाज द न्यूट्रिशन इंडस्ट्री. नाउ इंडिया में आप हम्म. देखोगे दो तीन चीजें हैं. The segment that we got into, it was a patented product that was हम्म. created, and we were among the first in India to create it, among the first in Asia हम्म. to create it, actually. And the question was that, it had an export market, but a very, very unique हम्म. market. I'll not go into the details of it, but fundamentally, it was, a nutrition product which can improve your health. हम्म. अब इंडिया में उसकी मार्केट नहीं थी, एंड हम्म. उसका मार्केट फिर हमें क्रिएट करना था. एंड देन वन ऑफ द यूज केसेस, सिचुएशन ऐसी थी कि प्लांट तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो हम्म. रही, प्रोडक्ट के अप्रूवल्स आ गए हैं, बट हमें पता हम्म. नहीं किसका कस्टमर कौन हो सकता है और कहाँ बिकेगा. हम्म. हम्म. So, I was the second person to join the business, and I was heading sales and business development. And फिर सवाल ये उठा कि इसको करना क्या है, कैसे बेचें. हम्म. तो वहां से स्टार्ट हुआ सिलसिला. And then, I remember having read up some 20-30 chemistry books, right? Because it was a chemical, natural राइट. chemical. तो उसको राइट. कैसे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उस पे आई वाज स्टडीइंग. फिर आई मेट अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स, जो अलग अलग हम्म. इंडिया के फूड कंपनीज में साइंटिस्ट होते हैं, उनसे मिला, उनसे समझा कि वो हम्म. लोग कैसे करते हैं. एंड देन थर्ड थिंग, बेसिस दोज लर्निंग्स, आई मैं कम से कम 100 मिठाई शॉप्स और हलवाई के दुकानों में बैठा हूँ, 100 से 200, एंड वहां पे बैठ हम्म. के ट्रायल्स लिए. सो इट एंडेड अप बिकमिंग अ नेचुरल शुगर रिप्लेसर. Most of the sugar replacers you see in India are artificial and very, very harmful. बट इसमें हम्म. वो सब प्रॉपर्टीज थी, तो उनके फिर रेसिपी बुक बनाई हमने बैठ के. एंड विद इन 6 months वी वर एक्चुअली लाइव इन द मार्केट विद अ प्रैक्टिकल, कमर्शियली वायबल एंड अ वेरी, वेरी हाई इम्पैक्ट सोल्यूशन. हम्म. So कहीं ना कहीं उसका असर दिखा, and we managed to create a very good business around it. So this is one of the examples, and there are 4-5 other businesses that I've had the opportunity to build. And सब में एक ही हम्म. बात की खुशी होती है कि while profitability, financial focus is always there, viability and everything, but it ended up creating impact. It at least helped the people by creating a हम्म. solution which did not exist earlier. सो कहीं ना कहीं उस बात की बहुत खुशी रहती है कि आपके जब कस्टमर्स आपको आके बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ, दैट हेल्प. सो वन ऑफ द एग्जांपल्स इज नेचुरल शुगर फ्री था, व्हाइल इट वाज गोइंग थ्रू द B2B स्पेस. वन हम्म. एस्टिमेट वी हैड ड्रॉन अप, इट्स डिफिकल्ट टू मेजर, बट करीब करीब वी बिलीव दैट 1 million customers would have benefited from that. And that's a ओह. big impact. So I think those some of the things we did were out of thin air, but a lot of pioneering work went in, which is always satisfying. राइट. अभी इसमें ना आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि अब ये बन गया, अब इसको इसका करना क्या है, राइट. तो बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो जिनको कुछ ना कुछ बनाने का एक कीड़ा बोल लेते हैं कि होता है, दे कीप क्रिएटिंग स्टफ एंड दे एंड अप क्रिएटिंग समथिंग व्हिच वुड बिकम ऑब्वियसली अ नेक्स्ट बिलियन डॉलर कंपनी. बट ना उनके साथ भी ऐसा स्टोरी होता है कि यार बना तो दिया, अब करना क्या है. सो हाउ डिड यू वेंट फ्रॉम अब करना क्या है टू क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट टू अ मिलियन कस्टमर्स एज यू सेड. तो वो प्रोसेस क्या फॉलो किया आपने, उसके अंदर बहुत सारे फेलियर्स भी होंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की होंगी, जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बट हाउ डिड यू थिंक अराउंड क्या मुझे कैसे इसको स्ट्रैटेजाइज करना है. वो बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स का जो प्रोसेस है उसके ऊपर अगर आप कुछ बताएं सो दैट पीपल कैन गेट मोर इनसाइट्स फ्रॉम दैट पार्ट. So I think in my whole career एक चीज मैंने सीखी है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है वो समझो, हम्म. हम्म. एंड ना कि आपने क्या बना दिया उसको बेचना है. सो दिस वाज अ क्लासिक सिचुएशन, राइट. हमने बना दिया, बट फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स ये वाली सिचुएशन कम होती है बिकॉज इट वाज एन इन्वेंशन. बट हैविंग हम्म. सेड दैट, हमने जो बनाया उसमें क्या क्या फीचर्स थे, सिंपल सी बात है, वो समझी. अब उसमें 7-8 फीचर्स थे इन दिस पर्टिकुलर हम्म. इनोवेशन वी डिड. बट उस 7-8 फीचर में कस्टमर को क्या चाहिए, and that is the journey that was the most critical. That's why I had met so many scientists, my team met so many, we did so many trials and experiments on the field, just to हम्म. understand कि इसकी application क्या है, customer को क्या फायदा हो सकता है.
Hmm. because sugar at that time I remember used to be 30 rupees a kilogram, and this used to be much more expensive. But why Hmm. should the customer pay you that much premium? आप क्या problem solve कर रहे हो? सो आई थिंक एक Hmm. मॉडल जो मैंने सीखा है विच इज वेरी प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी नहीं है इसमें। एक तो ये कि आप ये समझो कि कस्टमर को आखिर आज प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड वो प्रॉब्लम वो किस तरह से सॉल्व कर रहा है, Hmm. थर्ड उस सोल्यूशन से वो कितना खुश या नाखुश है, Hmm. हाउ सेटिस्फाइड इज ही विद दैट सोल्यूशन, फोर्थ हाउ कैन योर सोल्यूशन बी बेटर देन दैट ऑल्टरनेटिव, एंड फिफ्थ हाउ मच प्रीमियम इज द कस्टमर रेडी टू पे फॉर योर ऑल्टरनेटिव। ये जो Hmm. 5 स्टेप्स हैं, आई थिंक ये मैंने यूनिवर्सली हर सेक्टर और हर कॉन्टेक्स्ट में देखा, इट वर्क्स। इट्स जस्ट दैट आपको बहुत फंडामेंटली कस्टमर से जाके मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। एंड आई थिंक some of the startups I see are doing such a great job where all the founders, they're not ivory tower guys, they are on the field, they're talking to their Hmm. clients, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो यू नो फील्ड में हो। सो आई थिंक दैट रियली वर्क्स। कस्टमर का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, आई थिंक 90% ऑफ द आंसर्स विल बी देयर। Hmm. ओके। तो आपने किस टाइप की ऑडियंस को सेल किया था? मतलब CXOs लेवल के लोगों को रीच आउट किया था या मिड साइज के लोगों को रीच आउट किया था? Who was your target audience So in a again, nutshell? in this particular industry, again, in a B2B process की अगर मैं बात करूँ तो while of course the CXOs are the key people, they are the decision makers. So sometimes they used to be the chief scientists or the chief procurement heads. But Hmm. ultimately होता क्या है कि किसी भी process में आपके 2-3 लेवल के होते हैं, what we typically call कि यार आपका decision maker कौन है, आपका influencer Hmm. कौन है और आपका gatekeeper कौन Hmm. है। तो Hmm. इन तीनों से मिलना पड़ता था। एंड आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स द एंगेजमेंट यूज्ड टू बी आल्सो विद द अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड परचेज एग्जीक्यूटिव आल्सो, बिकॉज़ बहुत सारे इनसाइट्स Hmm. आप उनसे भी मिलते थे। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी क्रिटिकल इन दिस स्पेस, बिकॉज़ अल्टीमेटली इन द B2B थिंग आप अकाउंट को मैनेज करना है तो यू शुड नो ऑल द की स्टेक होल्डर्स इन दैट अकाउंट एंड build some strong relationships across, because Hmm. ultimately it's not unlike B2C where there's a lot of indulgence or emotional decisions that get taken, B2B में रैशनल डिसीजन ज्यादा होते हैं। बट Hmm. रैशनैलिटी को थोड़ा सा टेपर करने के लिए आपको इमोशंस रिलेशनशिप के थ्रू लाने होते हैं। एंड वहां पे Hmm. आप कितना, लाइक आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल, देयर वाज वन कस्टमर जिनको हम वी यूज्ड टू सेंड इट, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, वो 4-5 दिन ट्रांसपोर्ट के थ्रू मटेरियल उनके पास पहुंचता था। कई बार Hmm. कुछ इशू हो गया, डैमेज हो गया, बट वो कई बार कुछ सी वो वही सेम चीज या सिमिलर चीजें कंपटीशन से भी दे यूज्ड टू टेक। बट Hmm. अल्टीमेटली होता ये था कि व्हेन वी यूज्ड टू गो डाउन टू देयर ऑफिस फ्रॉम आवर सिटी एंड मीट देम, दैट इटसेल्फ, चाय पीने के लिए हम पहुंच गए, उनको बहुत रिस्पेक्ट फील होती थी कि Hmm. somebody has come down all the way just to meet. Hmm. It's very simple to send an email or pick up a phone and say, what, Hmm. ऐसा है, but it's not just about that, it's about showing that you matter, I value you. Hmm. एंड those small things used to pay a lot of, या कई बार ऐसा होता था कि आप बैठे हो, मिल रहे हो, you are figuring out that the customer has a lot of pain point, you may not have a solution, I mean you may not be selling that product, कई बार आप रेफर कर देते थे। I remember I have referred a lot of time my competitors because they used to have those products, एंड इसमें Hmm. कोई गलत नहीं है क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं है। I have referred a Hmm. competitor, but in the process I have solved my customer's problem, and I know Hmm. that even today I have not been part of the nutrition sector for now what, more than 5 years. आज भी every month I get orders from some of my old Hmm. clients कि यार आप मेरे को connect कर दो या हमारे को ये requirement है। Now Hmm. it's not that I have gone out of the way networking with them. It's simply that I solve problems and they remember us. Hmm. ओके। तो मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर डीप जाऊंगा। अभी हमने बात किया इन्फ्लुएंसर, डिसीजन मेकर्स, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, परचेज के लोग। बट अगर एक कोई स्टार्टअप है, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टार्टअप है, बड़ी कंपनीज को तो थोड़ा सा और एक ब्रांड वैल्यू की वजह से उनको इजीली गेट कीपर्स के थ्रू जाना बहुत आसान हो जाता है, राइट? थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है। बट कोई यंग स्टार्टअप है, उसको रीच आउट करना है CXOs को। अब उसको इतना सब कुछ नहीं पता जितना एक प्रोफेशनल सेल्स मार्केटर को पता है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड देम एज अ स्टार्टअप, व्हाट दे शुड डू when they want to reach out and their product basically falls into the B2B enterprise sector where they have to reach out to CXOs? आप क्या रिकमेंड करते हो, उनको किस तरीके से रीच आउट करना चाहिए? I think it's a very pertinent question. दो तीन बातें। I think the world is changing in the B2B space even today because of digital. पहली बात तो I हम्म। think I see there is a coexistence or collaboration that is there. Every large हम्म। organization needs startups and fintechs or anybody that you may call
as partners. Hmm. I think generally हर sector में मैं देख रहा हूँ there is a ample opportunity for an ecosystem led approach. Now the Hmm. question that comes is that how do you approach the gatekeeper or the key influencer or decision maker? I think दो Hmm. तीन चीजें हैं and ये मेरे खुद के experiences हैं because I keep meeting startups almost on a daily basis. I know Okay. and, what I have figured out, the ones who are doing a good thing, and that's my hypothesis, the ones who are able to crack deals better than some of the others is they are not trying to sell their product in a meeting. Suppose आप Hmm. मान लो एक cold email भेजते हो, बट email में आपने ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण it attracts my attention. Most of the Hmm. time as a decision maker or as an influencer, I would like to know in very crisp detail, a crisp summary कि what is your value proposition, इसमें मेरा क्या फायदा है. डोंट Hmm. कॉल मी और पिंग मी जस्ट बिकॉज आपको मिलना है. कई बार ऐसे कोल्ड मीटिंग रिक्वेस्ट आती हैं, वी हैव गॉट समथिंग Yeah. इंटरेस्टिंग, वुड यू लाइक टू मीट. Yeah. व्हाई Yeah. शुड आई, अनलेस आई एम Yeah. वेरी मच इनटू दैट स्पेस. जनरली क्या होता है कि आप उनको ये दो तीन लाइन में कैन यू मेक अप, जिसको एलिवेटर पिच भी बोलते हैं. So can you Hmm. make that elevator pitch in 2 sentences and tell me this is the thing that you are offering, this is why you are good, and इससे मेरा ये फायदा होने वाला है. Hmm. If you can communicate in that crisp way, it grabs the attention. And then उसके Hmm. बाद you set up a demo straight away when you are meeting for the first time. अगर आपको मौका मिलता है, आप सीधा एक Hmm. demo prototype लेके आओ. Do not get Hmm. into, because as we say, the proof of the pudding is in the eating. तो अगर आपने Hmm. कुछ वर्किंग चीज हल्की फुल्की दिखा दी तो उससे बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन हो जाता है. इट कैचेस Hmm. द अटेंशन. And then third thing is, once you have got managed to cross that demo stage, उसके बाद, if your product is good, then generally you get a follow on. तो but ये Hmm. पहला जो एंट्री का जो आपका क्वेश्चन है, I think lot of times there's a lot of stuff going on, and I'm not saying it's right or wrong. I think it's contextual, but बहुत सारे टेम्पलेट्स बन गए हैं, बहुत फैंसी तरीके हो गए हैं अप्रोच करने के. बट आई थिंक द ओल्ड सिंपल स्टाइल यार, कि आपका फायदा क्या है, मेरे पास ये वैल्यू है, कैन वी मीट. I think that Hmm. professionalism works. Sometimes my also advice is that कई बार I find a lot of I don't know, some casual approach और बहुत ही Hmm. Gen Z वाला style of writing. Now please be careful who you are writing to. If you are writing to a very traditional organization, that tone Hmm. of language might be considered very frivolous. But if you are Hmm. writing to a young organization or to a person is a somebody who is himself Hmm. a millennial, then it's fine. So I Hmm. think don't have a one size fit all uh, communication strategy. तीसरी Hmm. बात, I think overall, how are you creating your, even if you're a small brand, I think how are you leveraging your digital ecosystem to kind of Hmm. create that awareness. I don't think today, in today's world, पहले ऐसा होता था आपकी जितनी बड़ी साइज है, ब्रांड है, उतना ही बड़ा आपका अवेयरनेस है. Today you may not be a Hmm. big brand, but you can still have a lot of awareness thanks to the digital democratization that is happening. तो अगर आप अलग अलग मीडिया यूज करोगे वेयर यू आर जस्ट मेकिंग अ वेरी टारगेटेड पिच ऑन व्हाट यू आर डूइंग, इट कुड बी वेबिनार्स, इट कुड बी the right platforms on social media, I think that itself can create a lot of pull and attraction for what you have Hmm. to offer. At least एक entry तो मिल जाती है, and then उसके बाद you can ride on. ओके, ग्रेट. अब ये बताइए, आपने इतने सेक्टर्स में काम किया है, कौन सी ऐसी सेल्स एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए होंगे आपने, आई एम श्योर, विद जी. डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ कोल्ड ईमेल्स. आपने खुद बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए कि किस टाइप की टोन यूज करनी चाहिए, कितना कंसाइज होना चाहिए. कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मोस्ट इफेक्टिव लगी आपको ओवरऑल सारे स्ट्रैटेजीज में से, जो आपको मतलब बहुत स्ट्राइकिंगली रिमेम्बर आप करते हो अभी भी, कि यार ये जो किया था ना उस टाइम पे, जब आप डिस्कस करते होगे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी, कोई ऐसी स्ट्राइकिंगली डिस्टिंक्टिव सेल्स की स्ट्रैटेजी है जो आपको लगा यार ये तो मतलब गजब कर दिया इसने, बहुत ही मजा आ गया ये करके, तो ये तो मैं हर जगह ही रिकमेंड करूंगा करना. और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बहुत ही घटिया है जिसको आप कोई कर रहा होगा ना उसको भी बोलोगे, मतलब अभी भारत पे के फाउंडर का वो मीम चल रहा है ना शीर का, कि भाई तू ये बंद कर दे. तो मतलब उसको आप ये बोल सकते हो कि यार ये वाली स्ट्रैटेजी तू बंद कर दे, इसको मत यूज कर. तो ये दोनों के कुछ एग्जांपल है ऐसा, कोई ऐसा आपके पास? So पहली बात तो I don't think there is a single answer you can give to any situation. I think everything is so हाँ. contextual. But हाँ. I know today's world, it's a digital forum on which we are talking. But हम्म. I think still the good old way of meeting and having a cup of tea is the best strategy. अगर आप मुझसे पूछो, ओके. humans are social, and I've been a big proponent of work from home, hybrid, a lot of things I've always believed. But after going through this whole thing, I've realized कि sales बिना मिले नहीं होती. हाँ, हम्म. unless you're a completely digital product, but उसमें भी there is a lot of F2F interaction, face to face interaction that's possible. But आपको मिलना हम्म. पड़ेगा कस्टमर से. I think उससे, because I remember I used to
have a target of meeting 30-40 customers in a month myself, and then my teams used to meet. It was not about selling, it was just meeting clients. I think वो Hmm. relentless perseverant जो journey plan है, I think that is very important. And that's why Hmm. my biggest takeaway is phygital. A model that Okay. I believe is you need to combine physical and digital. Digital technologies have to be used by your frontline salespeople or anybody for that Hmm. matter to make you more productive and make Hmm. it much more user friendly. For Hmm. example, अगर आप documents लेते हो, can you make it digital? Can you enable it, cut down the slack? But you cannot replace human relationships with artificial intelligence. Hmm. Relationship building, अगर आप बोलोगे Zoom पे कर लो, हाँ ठीक है, if there's a crisis, you can't step out. That's how we all have done in the Hmm. last few years. But अगर आपको थोड़ा सा और advance करना है, possible है, जाके आप मिलो. That is my Hmm. takeaway. Second, on what doesn't work, I think cold calling on cold data doesn't work. If I have to pick up Okay. one thing, because क्या होता है कि today there is a bombardment with customer. आज सब कुछ phone पे move हो गया real estate, and Hmm. therefore Hmm. people are doing much more on the phone that they used to do even 2 years, 4 years back. Hmm. ऐसे में I think people are becoming very irritated if they are getting unwanted calls. ये हमेशा से problem Hmm. रही है. You would have always seen telemarketing is unfortunately been singled out many times. But I Hmm. think now there is a genuine customer thing also coming in, that call when needed. And therefore, Hmm. how do you, but telemarketing is extremely important also, and it's value additive. While people may say Hmm. whatever, but I think it adds a lot of value. That's why a lot of sales happen through telemarketing. But Hmm. how do you make it more granular, so that you are Hmm. able to, using data analytics, figure out which is my target segment जिसको calling करनी चाहिए, और ऐसे target segment जिसको मैं nudge करके छोड़ दूं. So I think Hmm. that analytical granularity is, once it comes through, it will become powerful. But carpet bombing जो कई बार होता है, which I feel doesn't work because Hmm. return नहीं आता उसमें. Hmm. ओके, तो अभी आप रिटेल में हो, you're into retail banking Yes. अगर मैं बोलूँ उसको. Yeah. पहले आप B2B सेगमेंट पे थे, which was very different from what you're doing now. I've done uh, B2C also in the past, but yeah, large part was of या it. B2B. Yeah. करेक्ट. तो दोनों का सेल्स और मार्केटिंग और बीडी बहुत डिफरेंट काइंड का नेचर का रहता है. दोनों में से कौन सा आपको मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? अभी तो आप आंसर नहीं दे पाओगे हो सकता है मुझे. बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जिसमें हो आप अभी वो अच्छा ही लगेगा आपको, बट स्टिल मतलब कोई एक्साइटिंग पार्ट लगता है कि डिजिटल का मीडियम बहुत चेंज हो गया है, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में. तो अब सारा कुछ डिजिटली होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना ने उसको और ज्यादा एक्सपेडाइट कर दिया. फील्ड सेल्स बंद हो गया ऑलमोस्ट, लाइक जैसे आपने बोला फिजिटल की बात कर रहे हो आप, फिजिकल मीटिंग को कंबाइन करो डिजिटल के साथ. अब वो तो एलिमेंट 2 साल से तो बहुत ही जीरो हो गया था ऑलमोस्ट. तो उस टाइम पे तो डिजिटल ही बचा है 99% अगर मैं बात करूँ तो क्या इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है अभी वाले एग्जिस्टिंग रिटेल के अंदर? So पहली बात तो I have a slight disagreement on that view कि सब कुछ digital हो गया. I am myself driving digital, but I can tell you, अगर आप भारत की बात करो, पूरी कंट्री की बात हाँ. करो, हाँ. तो अभी भी फिजिकल ज्यादा है. यू नो ओके. ऐसा नहीं कि द होल कंट्री हैज कंप्लीटली चेंज. यस, वी हैव अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ टूल्स, बट हम्म. आज कोई भी सेक्टर उठा, आप रिटेल सेक्टर उठा के देख लो. जब हम्म. जब लॉकडाउन खत्म हुआ, ऑल द शॉप्स वर ओपन एंड ऑल द स्टाफ वाज या. वर्किंग इन द स्टोर. आप बैंक के ब्रांचेस उठा के देख लो, ऐसा नहीं है कि सारे हम्म. ब्रांचेस बंद होके डिजिटल हो गया है. You pick up हम्म. all the retail shops, you pick up all the हम्म. SMEs, all. So if you look at the India's employee base, हम्म. most of them are working in the SME sector. And राइट. except stringent lockdowns, most of them went back to work, physical offices. So अगर आप डेटा देखोगे तो ऐसा नहीं है. आई थिंक परसेप्शन हम्म. हमारा बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम इस इकोसिस्टम से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें और ज्यादा वो करेक्ट. एम्पलीफाई होता है. बट यस, यू आर राइट. कॉर्पोरेट साइड में ऐसा रहता है. या. हाँ, बट यू आर राइट, डायरेक्शनली डिजिटल हम्म. हैज डेफिनेटली टेकन अप. नाउ टू योर क्वेश्चन कि किसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग, आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन गेम. बट डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप D2C में देखो, आई थिंक देयर इज अ लॉट. हम्म. आई फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग बिकॉज there is so much that you can do with data in this space, हम्म. हम्म. especially at scale. अगर करेक्ट. आप इंडिया में भी देखोगे, out of 140, 135, 140 crore Indians today, if you take any cut from in terms of people who are using OTT, or say हम्म. e-commerce, or say for example stock broking, अलग अलग हम्म. segments हैं, या food delivery apps, कुल हम्म. मिला के आप देखोगे 15-20 करोड़ का कोहॉर्ट बनता है. एंड हम्म. उसमें से भी अगर एक्चुअल पेइंग पॉपुलेशन देखोगे, हु आर एक्चुअली गिविंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू पर यूजर, दैट नंबर इज मच स्मॉलर, अराउंड हम्म. 3
crores, or 4 crores if you take various estimates. So the question that, but that's still a huge number. Most of the European countries don't have that much population. So there are two kinds Right. of things which is very exciting in this space. A, within this population of 4 and maybe 20 crore, you can create so many different personas. And Hmm. सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप देखोगे, नॉर्मल फिजिकल सेल्स में क्या होता था, हम बोलते थे हर कस्टमर को जाके आप एक कॉमन पिच करोगे, बट साथ ही साथ उसकी क्या नीड है उसके हिसाब से आप पिच करोगे. In Hmm. digital, what is happening is that we are calling it n equal to 1, या hyper personalization की बात हम हो रही है, where you look at Hmm. data and then you start doing personalized offerings to the customer, completely in a digital way through analytics and algorithms. So that Hmm. is one space which will, in India, is going to take off in a big way. Second part, of course, is that the remaining population, the Bharat Hmm. population and the ones who don't have access. I think the whole economy as it grows, there's a great potential to offer Hmm. products to them and also to create disruptions, disruptive sales processes. How do you make it affordable? इतना सारा काम उसमें भी हो सकता है for the remaining part of the population. And that Hmm. again, the scale, the reach, the impact that you can make using some of the digital technologies for this population is enormous. So I think for me, that is the most exciting part to be in this space. So yes, I don't mind saying that I like B2C more than B2B, purely in terms Hmm. of the so much of innovation that can be done. Yeah, not that B2B में नहीं कर सकते, but yeah, Hmm. purely for that point of view. बिकॉज वॉल्यूम बहुत होता है ना डेटा का उसके अंदर टू एनालाइज. सो Correct. अब हम उसके ऊपर बात करते हैं. सो हाउ डू यू एनालाइज दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा? डू यू हैव एनी टूल्स और सॉल्यूशंस दैट यू यूजुअली यूज? कुछ ऐसे हैं ओपन सोर्स टूल्स यूज करते हो या कस्टम टूल्स यूज करते हो जो खुद के ऑब्वियसली नीड के हिसाब से आप कस्टमाइज करते हो? सो कोई ऐसा कुछ है जो you wanted to throw some light on so that people obviously can learn more from about that particular aspect of the business? सो मैं दो तीन चीजें कहूंगा. देखिए, टूल्स तो बहुत हैं एंड आई थिंक वी यूज Hmm. क्लाउड पे टूल्स हैं. देयर आर लॉट ऑफ डेटा लेक्स, बहुत सारी चीजें. बट सिंस द ऑडियंस इज आल्सो फ्रॉम सेल्स and marketing here, Hmm. I will talk from their point of view, how they can Right. leverage data rather than making, because I've worked on both sides, data science and all bhi dekha hai, but I don't want to go into that space right now. I Hmm. think सबसे पावरफुल टूल आज की तारीख में हमारे पास है स्प्रेडशीट. चाहे वो आप Hmm. एक्सेल स्प्रेडशीट का हो या गूगल, जो भी आप यूज करते हो, बट दैट Hmm. स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डेटा एनालिटिकल टूल्स, much more advanced than any normal non-technical person would need. Okay. Second, I think most importantly, what I have realized, what is data? एक है एनालिटिक्स, उसके पीछे की स्टेटिस्टिक्स एंड एवरीथिंग दैट कैन बी टेकन केयर Hmm. ऑफ बाय द एक्सपर्ट्स. चाहे आपके पास कोई डेटा एनालिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, जो भी है, मॉडल्स बना देंगे. बट मॉडल्स बनाने Hmm. के पहले आई थिंक व्हाट इज टू बी रिक्वायर्ड इज टू थ्री थिंग्स. ए, डेटा कल्चर. Hmm. क्या आपके Hmm. ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का कल्चर है? आर पीपल Hmm. अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा मीन्स? एंड एज अ Hmm. यूजर, चाहे आप सेल्स वाले हो, चाहे आप प्रोडक्ट में हो, मार्केटिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, do you know how to use that data and also to frame your problem statement correctly? Let me give a Hmm. simple example. Today you want to improve the productivity of your field force. अब वो कैसे करोगे आप? इन अ बी Hmm. टू बी एनवायरमेंट का मैं एक यूज केस लेता हूँ कि आज बी टू बी में मान लीजिए आपके पास 10 लोगों की टीम है फॉर अ की अकाउंट Hmm. मैनेजर. बट आप देखोगे कि किसी की परफॉर्मेंस ज्यादा है, किसी की कम है. जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्वर्सेशन ये होती है, यार इसका इसका लक अच्छा था, या इसने अच्छी Hmm. रिलेशन बना ली, बस वहीं तक कॉन्वर्सेशन रुक जाती है. नोबडी गोज डीपर ऑफन टाइम्स. Hmm. बट अगर आप एनालिटिक्स करोगे, आपको क्या देखना है कि फंडामेंटली सेल्स क्रैक करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. You will list down those attributes. Then Hmm. you will measure the performance of each individual against those attributes and you can create predictive models. And you can say Hmm. that यार इस तरह का अकाउंट अगर आया है ना, तो इस बंदे की ज्यादा चांस है इसको क्रैक करने की vis-a-vis this person. And I have actually Hmm. seen such models in work. मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. So what Hmm. my learning has been is a that the sales teams, people who are involved, should be able to frame their problems analytically. It's got Hmm. nothing to do with statistics. It's got nothing to do with technique. It's just that how do you frame your problem statement? Generally, I think problem ये होता है कि हमारे पास खुद के इतने experiences होते हैं that Hmm. bias आ जाता है. And we often say यार हमें तो पता है, हमने Hmm. तो इतना कुछ किया है. But what data culture says is that what you know is just a hypothesis. It can be a fact only if consistent data proves that it's a fact. तो Hmm. ये हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हो मुझे तो लगता है कि ये लाल रंग का प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकेगा. Hmm. आप मेरे एक्सपीरियंस कहती है.
बट आपको क्यों ऐसा लगता है, आपकी एक्सपीरियंस है, बट योर हम्म एक्सपीरियंस इज लिमिटेड टू योर ओन वर्ल्ड. व्हाई डोंट हम्म यू फ्रेम इट एज अ हाइपोथेसिस कि मुझे लगता है कि रेड होना चाहिए, इसका ये कारण है, एंड देन इसको हम्म टेस्ट कर लो. And we have done multiple such experiments. I had created a test bed of 10,000 हम्म such experiments. And ओके आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा 80% जो हमने हाइपोथेसिस हमारे एक्सपर्ट्स ने की थी सेल्स में, मार्केटिंग में, सबकी सब चेंज हो गई. हम्म क्योंकि it turned out A to be biased or B to be applicable only in a certain context. हम्म एंड ब्यूटी इस प्रोसेस की है कि आपको हमेशा अलग अलग हाइपोथेसिस बनाओ, आप टेस्ट करो. Digitally, obviously it's much easier to do, but even if you're not a हम्म digital process, offline भी आप take a small cohort of 30-40 people, आप एक टेस्ट कर लो उनके साथ, आपको आंसर मिल जाए. So it needs a tremendous amount of courage, हम्म professional courage, to say that I can be wrong. एंड हम्म अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमें हम कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी हमें हमेशा ये लगता है आई शुड बी राइट. हम्म Always nice to be wrong, accept it before it causes damage to you or to your business. That हम्म humility, I think data and digital, by creating the whole world in a small, हम्म एक साथ जोड़ के, it हम्म has made humility as a big virtue, vulnerability as a big virtue. हम्म पहले होता था आई नो इट ऑल. अरे आज गूगल में सब कुछ है, आप नो इट ऑल करके हम्म फायदा क्या है, राइट? सो हम्म उसी तरह आज डेटा पूल में, डेटा लेक में सारा डेटा है. तो आपके नो इट ऑल बोलने से कुछ नहीं होगा. आई थिंक वी डोंट नीड नो इट ऑल्स. व्हाट वी नीड managers and people to say is, I think this is it, but let me figure it out. I think people who हम्म know how to figure out solutions, solve problems, they'll succeed, rather than saying I know it all and therefore this is the right way to do. I'm not saying हम्म experience doesn't matter. Of course it matters, but experience हम्म has to work along with expertise of data. राइट. मैं बस लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इसके ऊपर, इसी के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा, कि आपने बोला कि कोहॉर्ट बनाओ 30-40 लोगों का, या फिर आप दूसरे टाइप से एक्सपेरिमेंट करो एंड हाइपोथेसिस को चेक करो. बट इन दोनों में बहुत सारे तरीके होते हैं रिसर्च करने के लिए. प्राइमरी रिसर्च बोल देते हैं एसेंशियली. सेकेंडरी तो आप ऑब्वियसली यू कैन रेफर टू वेरियस सोर्सेज. बट व्हेन यू कंडक्ट प्राइमरी रिसर्च, व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ डूइंग प्राइमरी रिसर्च? मतलब क्या आपको बात करना ज्यादा पसंद है या आपको डिजिटल सर्वे करना ज्यादा पसंद है? So I have always been a believer of, and I'm बहुत traditional हूँ इस मामले में, first do a हम्म qualitative research and then do हम्म a quantitative research. And I've actually done a lot of work on that space. तो हम्म इसमें तो पूरा एक सेशन निकल सकता है, but there are हम्म some beautiful models which I feel, अगर आप I'm sure हमारे ऑडियंस ने MBTI, Big Five, ये सब पर्सनालिटी टूल्स के बारे में सुना है. एंड हम्म उन्हीं के जो बेसिक फ्रेमवर्क है कंज्यूमर बिहेवियर्स में, आई हैव एक्चुअली स्टडीड, एंड अभी हाल ही में मैंने एक मॉडल इंप्लीमेंट किया था एंड गिव सम वंडरफुल हम्म रिजल्ट्स. सो हम्म पहले आप क्वालिटेटिव करते हो इन द स्मॉलर कोहॉर्ट टू टेस्ट योर सर्टेन assumptions and understand better, and then you go into when you quantitative. when you say qualitative, you mean that you would talk to them, You you talk to understand. customers in a Yeah, structured yeah, interview format, जिसमें आप correct. छोटा बेस लेके करते हो, बट वो तब होता है हम्म जब आपके पास बहुत सारी चीजें समझने. हम्म hello. I think we lost connection with Anish. एक बार हम ट्राई करते हैं दोबारा से, कुछ सेकंड्स वेट करते हैं बिफोर वी ब्रिंग हिम बैक. विल वेट फॉर हिम टू बी बैक. Thank you, Nitish. Thanks for the question. Thanks, Leela, and yeah, thank you. I mean, मैं वेट कर रहा हूँ. If we could have Anish back.
and then I'll ask the questions that you have sent. So we'll try and ask him that. I think he's back. Am I audible? I think there's some network issue. Yes, yes, Anish. Yeah, you're audible. Sorry, trouble. Yeah, Right. So I think yes. qualitative and quantitative is what I was saying, right? Quantitative then is Hmm. next step. But sometimes, you Hmm. don't have to do surveys. You can also do a lot of, especially if you're in a digital space, a lot of things can happen by simply the transaction data of customers. वो किस तरह से Hmm. उनका behavior हो रहा है on your, platforms. That itself can throw a lot of insights, and you don't Hmm. necessarily have to do surveys. So I think all these methods work together. Okay, great. Chalo, thank you so much for answering all the questions. And we have almost done with the session. कुछ एक दो questions आए हैं जो लोगों के हैं. I'll start with the first question that we have, which is from Nitish Mathur, and he's saying that how is the digital landscape changing in the banking sector sales from a marketing point of view? Okay. So I think it is changing tremendously, Hmm. right? I think there's a massive change and transformation that's happening in the BFSI space, especially as because most of the products are going digital, and I think one of the key areas where I see a trend that's happening is a lot of things moving to the point of sale. So embedded Hmm. finance is something that's it's a big take that's happening, and uske alawa a lot of standard products etc. which were earlier pen and paper based. A large segment of customers today are preferring to are comfortable taking them digitally. So I think in these two places there's a lot of change, and obviously even the the RMs and the field forces that we the banking sector has, I think they are also getting digitally equipped to offer better and better quality solutions and services to their clients. So I think a lot is happening. I think it's one space where some very exciting stuff is happening, which is helping our customers and also helping in financial inclusion in the country. Hmm. Okay. The next question we have is from Bhila Vadera, and the question is that please share some strategy for getting repeat sales or strategy to retain customers. I think two things I'm observing. A, the customer loyalty, my hypothesis again, is Hmm. that customer loyalty is lower these days. People want to experiment and have choices. So if you Hmm. know, it depends in as a strategy, आप कितना hook बना के रख पा रहे हो, आप कितना जिसको हम strategy में moat बोलते हैं, what is your moat? Hmm. आप Hmm. कैसे उसको ऐसा ring fence करते हो कि customer आपके साथ hook हो जाए. But I think Hmm. two things. A, there's no time to be comfortable. If you have won the customer and even if you're on the top of mind, you have to keep bringing in new features or new solutions Hmm. so that the customer finds you relevant. एक जमाना था Hmm. जब हम बोलते थे ब्रांड रिफ्रेश कर देते हैं, Hmm. 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 एंड देयरफॉर कस्टमर को एक नया चीज फील होएगा. But I think Hmm. today product refreshes are happening every day. So I Hmm. think that is the journey, and of course, this depends on which industry you are in. But Hmm. clearly, fundamental तो वही है. Are you creating the right value? But Hmm. the customer को क्या होता है कि today there are so many new products and solutions that are coming. The pace of development is fast. So while they Hmm. may have gotten the value from you today, maybe after 6 months or 1 year, some other competitor comes up with a new thing, and the customer is open to try it out. I think that's where I'm Hmm. saying the loyalty quotient is lower, and Hmm. therefore how are you refreshing yourself so that your value proposition is intact. I think that is the key, and it's not an easy answer. Retention is always a challenge, but I think it's all about the DNA of your organization and how the value propositions are being built. Great. Thank you. Thanks for answering. कोई और क्वेश्चन अगर है किसी का तो प्लीज आस्क इट इन द चैट एंड आई आस्क फ्रॉम अनीश. बट हमारा सिर्फ एक लास्ट 1 मिनट का सेक्शन रहता है अनीश, जिसमें वी आस्क यू टू ऑप्शंस. इट्स अ रैपिड फायर राउंड. मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, दो ऑप्शन पूछूंगा, एंड यू हैव टू जस्ट आंसर वन. So are you up for that particular section? Should I Sure, start? sure. Okay. So the first is do it all or get it done. Getting it done. Okay. Quality or quantity? Quality. Training freshers or recruiting experienced people? Retraining everyone. I think we all relearn. Okay. Hard work or smart work? Smart work done with a lot of hard work. Both are equally important. Work from home or office? Hybrid. Hybrid. Okay. 10 to 6 or flexible hours? Flexible hours. Inbound or outbound lead?
Inbound lead is a dream. It shows that you have a great brand recall. Okay. Incentive or no incentive? I think the fact that we are able to be in India at this time is an incentive in itself. Your work, your passion is an incentive. Everything else is secondary. Cold email or cold calling? Cold emails in the order of priority. Okay. Money or recognition or promotion? Creating an impact. Everything else is a byproduct. Okay. Handling managers or handling customers? Handling customers any day. Okay, okay, great. Thank you. Thanks for answering all those questions. And I mean, वो section खत्म हो गया है. And thank you for participating in such a really fun way. किसी और का कोई question नहीं है, I think so. So we'll wrap up the session now. Once again, thank you so much, Anish, for being a part of this. And thank you so much, audience, for listening and staying tuned for this particular podcast, LinkedIn Live session, as we call it. So Anish, if you want to say anything before you go, before we close the session, please. No, thank you for having me. I think it was a wonderful session, and great to share insights. And I hope the audience benefited. My simple message is, it's a great time to be in India to create things. And while we do it for our businesses or wherever we are, two things ultimately matter. Are we creating enough value for our customers, Hmm. and eventually, are we happy mentally, personally? Because happiness is not about the money and anything. All those will follow, but are you happy with what you are doing? I think that is a fundamental thing. I feel is important. Time Hmm. passes away. It's a very short life. Make most of it. Hmm. Great. Thank you. Thanks a lot again, and have a good day. Bye. Thank you.